डियर स्टूडेंट्स, हम सभी लोग अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों ने गति के नियम का स्टडी किया था और वो गति का क्या कारण होता है, जो उसको हम लोग डायनामिक्स बोलते हैं, तो डायनामिक्स में हम लोग इंटर कर गए थे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, दैट इज फोर्स, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल किया था। और फोर्स कितने तरह के होते हैं उसके बारे में भी ब्रीफली हम लोगों ने स्टडी किया था, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, देन स्प्रिंग फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इसके अलावा हम लोगों ने जो फंडामेंटली फोर्स चार पार्ट में डिवाइड किया गया है: ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू चार्ज, a strong force, that is short range force applied in nucleus, and weak force, that is even shorter short range force. So today we will study the first law of motion. We will study first law of motion, Newton's first law of motion. We will study Newton's first law of motion. Newton first law of motion. Basically फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी नहीं है। दिस इज रिलेटेड टू समथिंग कॉल्ड इनर्शिया। इसलिए हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। सो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया कोई भी ऑब्जेक्ट यदि किस स्थिर अवस्था में है, इन रेस्ट पोजीशन, और यूनिफॉर्म मोशन में है, इन दैट कंडीशन वो ऑब्जेक्ट अपने उसी पोजीशन में रहना चाहता है। यदि वो रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट में ही बने रहना चाहता है। यदि वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में भी रहना चाहता है। हम लोगों को भी आदत वही है, लेजीनेस जिसको बोलते हो, लेजीनेस। सोए हुए हैं तो सोए ही रहना है, बैठे रहते हैं तो बैठे ही रहना है। मतलब ऐसा है कि जो अपनी स्थिति है ना उसी में बने रहना, अपनी स्थिति को परिवर्तन नहीं होने देना। ये जो टेंडेंसी होती है, दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो वह ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट पोजीशन या यूनिफॉर्म मोशन का जो पोजीशन है उसी में रहेगा। उसमें किसी भी प्रकार का पोजीशन, गति में चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा। यदि वो स्पीड v से मोशन मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यू v मोशन विथ स्पीड मूव करता रहेगा। यदि वो कहीं पे रखा हुआ है तो वो रखा ही रहेगा, वो वहां से डिस्प्लेस नहीं होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहां पर एक कंसेप्ट आ रहा है, नेट रिजल्टेंट फोर्स। ये नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या है? व्हाट इज नेट रिजल्टेंट फोर्स? तो हम सभी लोगों ने यह देखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे किन किन तरह के फोर्स लग सकते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट है इवन इन एयर, तो हम लोगों ने देखा था कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट एयर में है और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो क्या इस पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होगा? तो नहीं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इस पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या है? 0 नहीं है। उस पे नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रहा है? उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg, ये एक फोर्स लग रहा है। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू इसकी 0 नहीं है, इसलिए इस पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होगा। अब यही ऑब्जेक्ट को यदि आप
टेबल पे रख देते हैं और टेबल जो है वो स्थिर है, टेबल क्या है, स्थिर पोजीशन में है, तो ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑन द सरफेस एक और फोर्स इस पे डेवलप होगा जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, और एक फोर्स आपका ऑलरेडी mg है, वो इरेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन लग रहा है। तो अब यहां पर हम लोग यह देख सकते हैं कि जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वह आपका 0 हो जा रहा है। इस कंडीशन में आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगेगा। यदि यह ऑब्जेक्ट इस टेबल पे स्थिर अवस्था में है, रेस्ट पोजीशन में है, तो वो उसी रेस्ट पोजीशन में रहेगा जब तक कि आप आकर के उसको धक्का ना दे, जब तक आकर के कोई स्प्रिंग उस पर फोर्स ना अप्लाई करते, तब तक ये अपने उसी पोजीशन में रहेगी, अपने रेस्ट पोजीशन में रहेगी। क्यों? क्योंकि यह अपनी इनर्शिया की वजह से यह अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना चाहता है, जो अपना वर्तमान स्थिति है उसको मेंटेन रखना चाहता है। इसलिए यहां पे आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है। इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे आपने वो किसी सरफेस पे रखा हुआ है, तो एक नॉर्मल फोर्स लग गया, दूसरा आपका mg लग गया, और आपने यदि धीरे से धक्का दिया तो जितना जोर से आप धक्का दे रहे हैं उतना ही जोर से फ्रिक्शन फोर्स भी डेवलप हो रहा है। अगेन इस पूरे सिस्टम में जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वह नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। जब नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा तो यह जो ऑब्जेक्ट है ये अपने पोजीशन में बरकरार पोजीशन में बने रहना चाहता है, अपने पोजीशन में बने रहेगा, अपना जो वर्तमान है, जो प्रेजेंट पोजीशन है, उस पोजीशन में बने रहेगा। इसलिए यहां पर भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ? अगर हम टेक्निकली मूव करें, लॉ ऑफ इनर्शिया को यदि हम थोड़े समय के लिए भूल जाए और केवल फोर्स के टर्म में हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करें, तो हम लोग देखेंगे कि पहला कंडीशन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट रिजल्टेंट फोर्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है कि उस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसका एडिशन करके जो एक नेट रिजल्ट निकलेगा उसी को हम लोग नेट रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। हम लोग ये क्यों नहीं बोलते हैं कि कोई फोर्स ही नहीं लगेगा? तो इन रियल लाइफ में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ सिचुएशन वेयर नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। इसीलिए नेट रिजल्टेंट फोर्स की बात यहां पर की जाती है कि यहाँ पे दसों दिशाओं से भी फोर्स लग रहा है, सबको जब हम वेक्टर एडिशन करेंगे, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका नेट रिजल्ट जब 0 आएगा तो हम उसको बोलेंगे कि नेट रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0। और जब नेट रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड एन ऑब्जेक्ट इज 0, in that condition the object will maintain its position either in the position of rest or in the position of uniform motion. Or now if it is not changing its position or uniform motion, like if it is rest and it is going to some velocity, occurring some velocity, so we are there is a change of velocity, and that change of velocity will be equal to a rate of change of velocity will be acceleration. So that means if net resultant force applied on an object is 0, then there will be no acceleration on the object. There will be no acceleration on the object. I mean there will be no change in velocity. If it is in rest position, it will continue to be in rest. If it is in moving position, it will continue to move with uniform velocity. Okay, so this is the way to think about the first law of motion. Now the first law of motion, the first law of motion is also related to frame of reference. Frame of reference.
frame of reference. यह फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? What is this frame of reference? What is this frame of reference? हम सभी लोग जानते हैं कि जो मोशन होता है वह मोशन रिलेटिव होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रही है तो दैट इज मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू सम ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो वो रिलेटिव टर्म है। अगर किसी ऑब्जेक्ट रेस्पेक्ट में यदि उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इन रेस्ट पोजीशन है विद दैट ऑब्जेक्ट। यदि उसका पोजीशन चेंज होता है तो वी आर टेलिंग दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और चेंजिंग इट्स पोजीशन और ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो वी हैव टू थिंक अबाउट अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। If something is moving on the earth and we are telling that the object is moving, even though we are not mentioning that frame of reference, still in back of our mind we are thinking that earth is our frame of reference. Okay, see, when we are traveling in the bus, we are telling that some person sitting in front of us, telling that that person is sitting in front of us. That doesn't mean he is not moving. In that condition, we are taking ourselves as a frame of reference, and because with respect to myself, the position of that person is not changing, so we are telling that he is sitting in front of me. Sitting means no change of position. He is in rest position, but he is moving in the bus, and bus is moving with respect to earth. So if someone outside the bus will say that no, the person is moving. So this frame of reference decides that is an object is in the rest position or in the motion with respect to some other object. So this frame of reference is very important. Now when we are thinking that the first law of Newton's first law is related to rest or motion, then it must also be related to some frame of reference. Is it applicable equally to all frame of reference, or it is applicable to a particular frame of reference? So in fact it is applicable to a particular frame of reference, and those frame of reference where Newton's first law of equation is applicable is called Newtonian frame of reference. Newtonian frame of reference, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं जड़त्वीय जड़त्वीय जड़त्वीय। तो न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, न्यूटोनियन जड़त्वीय निर्देश तंत्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लो कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स है और इस बॉक्स में there is some flies, there is some flies, okay, and there is some object like this, okay. So some rock, so we are just we are just dropping this box and also this this rock together from some height without giving any initial velocity. In that condition, this box as well as this ball will start coming down with the same velocity, with the same velocity, with the same speed also, so with the same velocity. Now when both are coming down with the same velocity, so what will happen? When these flies will see this rock, then it will see that the position of this rock is not changing. The position of this rock is not changing. But for outsiders who is standing on the earth, they are saying that the position of this ball as well as this box and as well as the flies are changing with time because they all are coming towards the earth. Now let us take that what are the external forces applied on this ball. So we are finding that
There's one and only one force, and that is due to force due to gravity. For the timing, we are considering this is in vacuum, so there is no drag force, no force due to air, etc., air resistance. So the force due to gravity, the ball is coming down. So according to this, what will this fly say? This fly is saying that this object in the rest position. This object is in the rest position. Though it is accelerating and this is also accelerating, both are accelerating with equal acceleration. So at all times, the speed of both the objects are both box as well as this ball is same. This rock is same. So there is always no relative motion. So this is always in rest position with respect to flies. So this flies will say that the rock is not moving. The rock is not moving. So according to, and then he will say, he will start teaching Newton's first law of motion and will tell to other flies that see, as there is no motion, there is no motion in the ball is maintaining its position of rest. So the net resultant force will be zero. The net result force will be zero on the rock. So according to the flies, this fly is telling her students that there is no force on the object. But here, teacher is teaching students, and then he will say, no, this ball is falling with some acceleration, and there is some external force, that is mg. So according to this, some force is applying on this ball. So according to this frame of reference, Newton's first law of motion is not applicable because there is some net force, and because of net force, this object ball will accelerate. So phenomena is same, the same phenomena, the falling ball, but the thinking is different. According to this flies, Newton's first law of motion is applicable, but according to this person standing on the earth, the Newton's first law of motion is not applicable. Then who is right? Who is right? Then we have to think about what is the right frame of reference. In reality, there is some forces applicable on this ball. In reality, on this ball is a force is applied. So in a frame of reference where the net resultant force is zero and also its motion is not changing, then only Newton's first law of then that frame of reference will be called Newton's Newtonian frame of reference. Newtonian frame of reference. तो न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब किसी ऑब्जेक्ट पे नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा तो वो अपना इनिशियल पोजीशन या इनिशियल मोशन को बरकरार रखेगा, कंटिन्यू रखेगा, बट यदि उस पे नेट रिजल्टेंट फोर्स नहीं लगता है तो वो बॉडी एक्सेलरेट करेगा. बट यदि वो न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है तो नेट रिजल्ट होने के बाद भी वो रेस्ट पोजीशन में रह सकता है, नेट रिजल्टेंट फोर्स रहने के बाद भी वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर सकता है. इसलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल इन ओनली इन द न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अर्थ may be considered as Newtonian frame of reference for all our practical lessons and practical applications. Earth can be taken as a Newtonian frame of reference, but in reality Earth is also not an Newtonian frame of reference because Earth is also accelerating. Earth is also accelerating because it is moving around the sun. It is rotating, so it is always accelerating. And because it is always accelerating, it cannot be Newtonian frame of reference. So in this way, we have studied the first law of motion, that is Newton's first law of motion, and that is telling the concept of inertia. And
simple thing that if the net resultant force is 0, there will be no motion. There will be motion but uniform, or that will be, or else the object will be in the rest position. If there is some acceleration, in that condition there must be some net resultant force, and that will be studied in detail in the second law of motion. Thank you.